ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले we'll start the transformation, and in transformation, in Cambridge we have transformation, and these are my handmade notes. So you will get the copy after the lecture. So there are four types of transformation. The first one is translation. Second one is reflection. Third one is rotation. बेटा make your own notes, साथ साथ ही बनाते रहें। और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो इधर वेट करें जब नोट्स आपको मिल जाए, लेकिन बाद में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? अभी पढ़ें ताकि बाद में पढ़ना ही ना पड़े। मई जून में पेपर है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन करूँगा। सो ट्रांसलेशन, ओके जी। Translation means, what is the meaning of translation? Translation means sliding. Means sliding a shape, no change in size, no change in size and rotation. कोई change नहीं होता size में और rotation में. Translation is represented by vector, and how a vector is, and this is the vector x and y. Okay, x shows when x is positive, go right. When x is negative, go left. In Cambridge, you will receive the question of 2 marks on this translation, and it's a very piece of cake. For example, in Cambridge examination, there will be a grade available to you, like let me decrease the size. Oh, that's fine. For example, it's a grid right in front of you, and I'm going to draw. It's a y-axis, and this one is the x-axis. So now let me write the coordinate 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay, that's minus 1, minus 2, that's minus 3. Okay, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. As you can see that I'm going to draw a shape here. Please focus everybody. So this point is minus 4. Okay, first of all, let me copy this grid. Okay, done. So first of all, I'm going to draw a shape here. Like this. Okay, so the examiner will ask a question like this. It's a question 1 or type 1 can be like this. Translate triangle A onto triangle B by vector. Okay, so as you can see that it's 2, this 2 is positive, means 2 steps towards right, go right, and then 1 down, then go down. Let's see how it happens. For example, this is shape A, so I'll take 2 steps towards right. For example, this is my coordinate, these are my coordinates, and this is my A point. I'm translating point A, so it will move towards 2 steps towards right,
and one step down. So this point will be my A dash. Okay, so like let's suppose if this is my B, so two steps towards right like this and one step towards down, this point would be my B dash. Okay, so I'm erasing this thing because we need to translate only one point, and then we can easily draw the shape because the shape is translated, so there will be no increase in size or rotation. So this is my answer. So I can write here, this is my part A. So examiner will give you 2 marks credit, for example. So this is part A. Okay, so let me make this triangle, one more triangle here. And what can be the another type of question? Like for example, it can be something like this. Okay, this is triangle B. So type 2 would be type type 2 would be something like this. Describe fully single transformation that maps triangle A onto B. So you will get the question for 2 marks, as I said. Okay, so for the answer you would be having 2 lines in the exam like this. So you have to write two things here. Let's see. Describe fully single transformation that maps triangle A onto B. As we can see that triangle A onto triangle B, the capital A1, okay, not the small a1. Triangle A and triangle B is translating, right? There is no increase or decrease in size, or there is no change in the rotation of the triangle. So it means that the shapes are translated. So you will have to write translation. And to find out the vector, you need what? To find out the vector, you need what? You need to draw an arrows like that. So first of all, let me make the vector here, place here. Let's see. I have to start my car and I have to go till point B, till triangle B, and let's see. This is point C, and that would be my C dash. Let's start the car, and I'm only allowed to go up and down, left, right. Okay, I cannot go in like this way. Okay, I cannot go in this way. Okay, let's see. So let's see. Let's go down because the shape is down. So this much down. Okay, that's how much down? One, two, three, four, five. So one, two, three, four, five. So it's -5. And then I have to take a right turn like this. Let's count the boxes now. One, two, three, four, five. So five towards right and five down. So five towards right and five down. ओके ओके जी, समझ आ गई मेरा बेटा? सब दोनों को समझ आई है? यस और नो? जी सर। यस सर। ओके जी, हुड समझ आ गई बेटा? Sir. ओके जी, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रांसलेशन. फॉर एग्जांपल अभी सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम लोग. एंड बिफोर प्रोसीडिंग हम लोग सेकंड टाइप लिख लेते हैं. व्हाट सेकंड टाइप इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा, इट्स अ मिरर इमेज. व्हाट इज दिस? इट्स अ मिरर image. And if we have the mirror image, we must have the reflection line, और मैथ्स में इसको बोलते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइन ऑफ reflection. So we know this ke, for example, if we have a grid like this in exam, and in exam you would be having all these all together. Okay, so you have to just make it very comfortably. Okay, आपको इसको बहुत comfortably जो है ना, आपने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि आप इन क्वेश्चंस को ओके जी. सो
I'm going to draw the grid once again. So the grid is already drawn. So let's start. Okay, so let me write the values here. 1, 2, 3, 4. It's -1, -2, -3, -4. Okay, so it would be -1, -2, -3, and that is -4. For example, I'm going to draw a shape like this and like this. So let's draw it. Okay, okay, it's triangle. Okay, now they say that type 1, type 1, reflect triangle A at x is equals to minus x नहीं करते, चलें पहले y करते हैं. At y is equals to -1. Okay, this is my equation of the line. So it means y is equals to -1 would be somewhere here like that. Right, Arbab? Yes, So sir. let's start reflecting the shape. Okay, this is my point. So it is 2 blocks away from the mirror line. So it must go 2 blocks away from the mirror line. So that would be my point. Yes or no? Okay, this point is again 2 blocks away from the mirror line, so it will go there as well. Agree? Okay, so let me draw the shape here. Okay, so it means that this point would be somewhere here. Agree or not? Yes or no? Yes, sir. So this is my reflected shape, and for example, this is my reflected shape, and you must know that what are the values, how to find out the equation of the line, so then you can easily reflect the shape one by one. So for example, the type 2 question would be, they say that, let me make the question first. For example, a triangle is already made, and this triangle name is B, and the name of this triangle is A. Name of this triangle is A. So ऐसा करते हैं कि ज़रा इसको इरेज कर देते हैं, ताकि इधर मैं A लिख दूँ ताकि वो A जो है नज़र आए. ओके, describe fully single transformation. Describe fully single transformation that maps triangle A onto B. So you would be having 2 lines in the exam like this, one, and this one is another line. So you would have this question for 2 marks. Reflection and translation is always for 2 marks. Okay, so tell me what happened here. What is the name of the transformation by which triangle A can be mapped easily onto triangle B? What is the name of the transformation that maps triangle A onto triangle B? Translation, sir. Yes, it's a translation. So it's a what? Translation, sir. Sliding way, no? देखें आप यहाँ पे ट्राइंगल ए और बी आपस में स्लाइड हुए हैं कि रिफ्लेक्ट हुए हैं? Slide way, sir. Reflective, कि reflective. Mirror स्लाइड, image. Mirror image. Yeah. it's a mirror Reflective. image. So yeah, so the answer is reflection at, now let's find out the mirror line. So let's count the boxes, and the mirror line would be in the center. So for example, there are 4 boxes, so it means that this line is my mirror line. Agree? And this line is y-axis, and equation of y-axis is x is equals to 0. Agree? So you can say that reflection at x is equals to 0 or along y-axis. You can write 2 things. Okay जी, समझ आ गई मेरा बेटा? जी, sir.
जी दोनों को समझ आ गई है? पूरा आपको समझ आ गई है बेटा? जी सर। ओके जी। सो फॉर एग्जांपल, the third one is enlargement. क्योंकि आपको जो ट्रांस रोटेशन के लिए जो है ना, वो आपको मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो मैं भिजवाऊंगा वीडियो आप लोगों को। थर्ड वन इज enlargement. As the name indicates, in this transformation there would be increase or decrease in size with a given scale factor, given scale factor given, मैंने दो दफा लिख दिया, चलो नो प्रॉब्लम, with a given scale factor and center. So what does it means? For example, this is a shape, and this is also a shape. So this shape is enlarged. For example, this is 2 and this is 2. This is 4 and this is 4. So the scale factor is double. Scale factor is 2. Agree everybody? समझ आ गई बेटा? Scale factor is 2 because these two shapes are enlarged. Okay, so let's find out in transformation that how can we expect a question from the examiner. So let's find out that how can we get a question from the examiner. So wait a minute, yeah, I'm just moving this grid. I don't know what's happening. Okay. Okay, I got the grid. Let's see. So for example, I'm going to enlarge a shape with a given scale factor. So let's see. It's a triangle right in front of you, and it's a triangle right in front of you, and they say that enlarge triangle. This is triangle A by the scale factor, by the scale factor 2 from the center, x is -3 and y is 0. Okay, let's see. So please focus. Okay, now that's tricky. So okay, guys, ready? Can I proceed? Yes, sir. Okay, G. In large triangle A by the scale factor 2, we have to double the shape, and from the center -3 0. So -3 and 0 is this center. Okay, so let's find out. These are my 2 points A, B, and C. So let me write here A, this is B, and this one is C. Let's go. Let's check that what is the distance from this center to B. I want to count the distance from center to B. So from center to B is, let me write down the vector here. From center to B is 1 up and 1 right. So it is going 1 up and 1 right. The scale factor, now the scale factor is 2. So let's check. So multiply with 2. So the answer is 2 2. So let's go 2 2 from the center. So now it's 2 right, it's 2 towards right, like that. Wait a minute, it's 2 towards right,
like that, and 2 up and 2 up. So this is my point, comma, it is my हम b dash. पहले स्टेप में हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, जी, हम पहले स्टेप में ट्रांसलेशन करेंगे ना, उसके बाद इनलार्जमेंट वाले पहले स्टेप में, या पहले स्टेप में वील फाइंड द वेक्टर यूजिंग ट्रांसलेशन, ठीक है, हम्म, समझ आ गई। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है डिस्टेंस, तो हमने यही किया, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको दूर बनाता हूँ ताकि ज़रा ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बने, एक मिनट, अच्छा। तो मैं इसका स्केल फैक्टर करता हूँ 3। मैं क्या बनाता हूँ इसका स्केल फैक्टर 3 बनाता हूँ, लेट्स चेक। ओके, ज़रा 3 से इसको मल्टीप्लाई करें जी, खाली 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 1 3 एंड 3 अप। सो लेट्स गो। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 अप आ जाए, तो 3 अप आ गया, तो दिस इज द पॉइंट, एंड 3 टुवर्ड्स राइट, सो दिस इज द पॉइंट। सो दैट पॉइंट वुड बी माई व्हाट, दिस पॉइंट वुड बी माई बी डैश। सो एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर इसको हम करेंगे तो ये ग्रिड से बाहर निकल जाएगा, और वो ग्रिड अभी इतना बड़ा हमने बनाया नहीं हुआ क्योंकि ऊपर मेरे पास पेज नहीं है। वेट अ मिनट, ऐसा करते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो ज़्यादा और हम लोग 2 पे ही रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। सो 2 2, so it means that 2 up and 2 towards right, so this is my point b dash. Okay, let's see. Now for example, you got 1 point, and we you can see that the distance from b to c is 1 block, so it would be here, right here, Bob. यस सर। Okay, it would be your what, it would be your c dash, it would be your c dash, ये हो जाएगा आपका c dash. Okay, now we have to join this point with this one. Okay, now you can see that the distance between c to a is 2 blocks, so it means that we have to go 4 blocks out. So we have to go, oh my goodness, मैं एक ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा हूँ। वेट अ मिनट यार, मैं थोड़ा सा इसको जरा एडजस्ट करता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। सर शेप्स वाई एक्सिस के दरमियान बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? ग्रेडेंट के दरमियान। ये कोई हरफ आखिर नहीं है कि शेप जो है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान बन ही ना सके, ठीक है। सो एक मिनट, अच्छा, मैं थोड़ा सा सेंटर चेंज करने वाला हूँ। सो क्योंकि ग्रिड मैंने बनाई हुई है, ग्रिड बनाने में ज़्यादा टाइम लग वाई इक्वल्स जाएगा। टू एक्स पे बन सकती है, या एक्स हाँ, इक्वल्स क्यों नहीं बन सकती? ओके, सेंटर मैंने किया है एक्स इज -3 एंड वाई इज 2, नहीं 2 नहीं, -2 करते हैं ज़रा। एक्स इज दिस इज कॉमा -2, ये मैं सेंटर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रिड बनाया हुआ है, देयर इज अ लिमिटेशन हियर। फिर बाद में मैं जब कोई दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया तो सेंटर जो है मेरे पास है -3 और -2, एग्री। ओके, एंड स्केल फैक्टर अभी भी जो है वो डबल ही है। सो लेट्स गो वन बाय वन। सो हम लोग वन बाय वन चलते हैं, और अगर ये इस तरह ना हुआ तो हम ग्रिड दोबारा बनाएंगे। सो दिस इज माई ए पॉइंट। सो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस। हूर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेक्टर फॉर ए, व्हाट इज द वेक्टर फॉर ए फ्रॉम दिस गिवन सेंटर, रेड वन, this one is the center. Tell me how we need, how much we need to go up or right or left. Hoor, can you hear me? Sir. Yes, tell me what is the vector from this given center to A. मतलब सेंटर से आप गाड़ी स्टार्ट करो एंड गो टिल ए, सो व्हाट आर द डायरेक्शंस? जी बेटा, अगर नहीं आता तो बोल दें। हूर, बेटा टर्न ऑन योर माइक, और क्योंकि आप माइक ऑन होता है फिर बंद हो जाता है फौरन ही। हरी अप। जी सर। जी बताएं, सेंटर से आप ए तक जाओ तो वेक्टर क्या होगा? Um, right? Yeah, one towards right, agree. जी सर। It would be +1, and up or down? जी, अप और डाउन? Down. बेटा अप जा रहे हैं, ए ऊपर है, ठीक है। सो इट्स 3 अप, सो 1 टूवर्ड्स राइट एंड 3 अप। सो टू मल्टीप्लाई विद स्केल फैक्टर, अब 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको इनलार्ज पॉइंट मिले। सो द आंसर वुड बी 2 and 6। सो अरबाब, यस सर। चाहे बेटा ज़रा सेंटर से नाउ 2 टूवर्ड्स राइट एंड 6 अप।
तो सेंटर इसमें कौन सा है? ए है ना? जी नहीं, ए नहीं है, ये क्रॉस आपको नजर आ रहा है। अच्छा ये है सर। हम्म। तो सर किधर जाना? एक काम करते हैं, जरा एक मिनट, जरा आप लोग सब्र कीजिए प्लीज। एक मिनट आप मुझे दीजिएगा, ठीक है? एक मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा। मैं अभी आप दोनों को बोलने वाला हूँ, तो आप दोनों ने अपने माइक्स ऑन रखने हैं, ठीक है? क्योंकि जितने कैंडिडेट क्वेश्चंस होंगे, वीडियो भी अच्छी बनेगी, और बाकी के स्टूडेंट्स जो कि क्लास में एब्सेंट हैं आज, उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है? अदरवाइज इतना फ़ायदा नहीं होता। तो जितना बड़ा मैं ग्रेड बनाऊंगा, उतना बड़ा जो है, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? इस क्वेश्चन पे आपको समझ आ गई तो आप कैमरे में 2 to 3 मार्क्स जो है ना, वो एग्जामिनर से आप ले सकते हो, ठीक है? सो काइंडली प्लीज़ फोकस करें। इन लास्ट ट्राइंगल ए बाय द स्केल फैक्टर 2, तो जितना बड़ा मैं ग्रेड बनाऊंगा उतना ही हमें बेनिफिट है। तो लेट्स सी कि कितना बड़ा ग्रेड हम लोग बना सकते हैं। सो जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है जी? हर ब्लॉक जो है ये एक एक डब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है? ये में 1 1 बॉक्सेज हैं, तो 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है, राइट? सो ओके, लेट्स ड्रॉ अ शेप हियर। एक शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके? एंड द सेंटर of the enlargement is, for example, center of the enlargement is this one, and the center के coordinates क्या हैं आपके पास? यहाँ पे अब सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए हैं -1 -2 -3 -4 -4 -1। सो इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा चेंज, -4 -1, सो इट वुड बी -4 -1, ओके जी? So this is the point A, this is point B, and this is point C. Please turn on your mics now. Hurry up. Turn on your mics, please. Both of you. Hoor, turn on your mic. Okay जी. Sir. Vector of A. Okay जी. What is vector of A? Start your car and go to A and tell me how much up or how much right. So it's 1 2 हाँ जी, Hoor. 1 It's 1 towards right. एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करके बताएंगे मुझे, एक एक बताएगा मुझे। 1 towards right 1 2 and 2 up. How many up? 2 up. So 1 towards right and 2 up. So the vector is, the scale factor is double. So multiply the given vector with 2. So it would be 2 and 4. So let's go from the center 2 and 4. So 2 towards right. Okay, 2 towards right, this one, and 4 up. So this is the point, and the name of the point is A dash. So now I'm removing the lines in order to remove the confusion. Okay, now we got this. Okay, Hoor, now the question is from you and you need to answer, okay? What is vector of B from the given center? G, tell me. Hoor, what is the vector of B from the given center? Just tell me. Sir. One right. One right. If I go one right, so I'll be here. Three is not. Where is Sir. B? How much right? Four. What? Four. बेटा 4 राइट आऊंगा तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पे चले जाएंगे, तो 3 पे रुकना पड़ेगा। एग्री? जी सर। देखें जरा गौर करें बेटा, ये आपको फिर समझ नहीं आएगी बाद में। सो 3 टूवर्ड्स राइट and then I have to go up because B is here. Agree? So 3 towards right and 2 up. So that's my vector. Now multiply the given vector by 2 scale factor. So 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So Hoor, now I'm erasing these lines. मैं अब आप ये lines अब मैं आप वापस मिटा रहा हूँ. Okay. So let's see. We have the vector now because we need to plot point B dash. So the given vector is what? एक मिनट, ये गलत हो गया, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 3 and 2 और रिजल्ट आएगा हमारे पास 6 and 4.
So 6 towards right and 4 up. So let's see, this is the center. So 6 towards right and now 4 up. So this is 4 up. So this is my B dash. Get it बच्चे? समझ आ गई सबको? अब मैं ये लाइंस में रिमूव कर देता हूँ. अरबाब, now your turn. Can you please tell me what is the vector of C? Sir, it's 4 towards up, From the center. 4 towards up, What? 4 towards up, and 4 towards up and 3 towards right. Very good. So vector of C is 4 towards up and 3 right. We can see that clearly we have to go 4 blocks up and then we can take 3 blocks towards right. So this is the vector. Now multiply the vector by 2 because the scale factor is 2. So 2 threes are 6 and 2 fours are 8. Let's go, Arbab. So let me change the color. So the vector is 6 towards right and 8 up. So let's go. So 6 towards right, agree, and Yes, sir. 8 blocks up. So this is 4 and this is also 4. Agree? Yes, sir. So we got this point and this is my C dash. Agree? Now I'm removing the extra lines. It will create a confusion for you. And let's join these two, these points together to see. This is A dash. Oh my goodness. This is, yeah, let me erase this line first of all. So let me erase A to, let me join A to C, C to B, C to B, and A dash to B dash. So the shape is enlarged. As we So can may see I that this is 2 blocks and this is 4 blocks. So the sir, scale factor is double. एक मिनट जरा बेटा जी, सर मैं ये पूछा कि सारे कैलकुलेशन करना जरूरी है, क्या करने जरूरी है? सारे कैलकुलेशंस करना जरूरी है, नहीं नहीं नहीं, आप एक क्योंकि सर पॉइंट को अगर भी सही लगा लिया. आप फर्स्ट अगर के आपने एक भी सही ए मिल गया ना, तभी हाँ तो फिर दरमियान में आप दो खुद ही बनाए ना. ए टू बी 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस तो थोड़ा डबल करके 4 हो गया, बी टू सी 2 ब्लॉक्स का यस डिफरेंस तो वो 4 हो गया. यस यस यस, आपको एक पॉइंट सही लगाना है, फिर आप बाकी के खुद भी लगा सकते हैं. ठीक है, जी सर. समझ आ गई है बेटा? जी सर. ओके, लेट्स सी द लास्ट वन. ये enlargement का आता है. अच्छा जी, फिर इसमें होता है कुछ इस किस्म का. ये पास पेपर में आगे क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पड़ेंगे. रोटेशन, द लास्ट वन इज रोटेशन. रोटेशन इज टू रोटेट a shape by given angle normally in Cambridge 90 degrees और 180 degrees जो है ना बहुत कॉमन होता है. And सर इस पूरे direction by चैप्टर में direction फॉर्मूलाज I नहीं है ना, mean. जी, पूरे चैप्टर में फॉर्मूलाज कुछ नहीं है ना. नहीं नहीं नहीं, जनरल चीज़ है. 90 और 180 एंड डायरेक्शन, डायरेक्ट बाय डायरेक्शन आई मीन्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, so you should know what is clockwise and what is anti clockwise. ठीक है जी. And for example let me tell you, for example this is circle. अगर आपको नहीं आता तो this is clockwise movement. Agree? Yes or no? So this is clockwise, and if you don't know what is anti clockwise, so anti clock के लिए we have to go this way. So this is anti clockwise. Anti clockwise. So it's very simple. अगर आपको थोड़ा सा सेंस हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से शेप्स को रोटेट कर सकते हैं. लेट्स सी, फॉर एग्जांपल दिस इज सेंटर एंड दिस इज शेप ए. इट्स लाइक दैट. तो ये कोऑर्डिनेट्स पे बनी हुई है. ठीक है, तो ये गैप जो है थोड़ा बहुत आप इग्नोर करें. ओके, रोटेट शेप ए, रोटेट शेप ए बाय द सेंटर 0 0 90 डिग्री clockwise. तो 90 डिग्री clockwise रोटेट करना है. तो वी हैव 3 पॉइंट्स. लेट्स सी, we have 3 points and this is my center. Let's join this point with the center, and it is 1 block away, so it must be 1 block away here, so it would be clockwise 90. Yes or no, Arbab?
Yes, sir. So it means that this point will come here. Agree? Hmm. So automatically, if this is my B point, एक so पॉइंट के B हिसाब है ना. point will go there. Yes or no? सीधे भी एक पॉइंट के हिसाब है ना. वही वही पॉइंट शेप में रोटेशन में इनलार्ज तो नहीं होगी ना. अब नहीं ये बस. सी पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट यहाँ पर आएगा अरबाब. जी जी सर. So, तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे लाइक दैट. सो दिस इज क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज रोटेशन. सो ये जब आप कर लें तो आपने पेपर में भी कोशिश करनी है कि ज़रा नीटनेस से काम करना है, ताकि आप इसको शेयर भी कर सकें. ठीक है, ओके. सो इसको मैं करूँगा सफाई से. ओके, डन. चले जी, ये रोटेट हो गया. फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज फ्रॉम सेंटर 0 0. अगेन सेंटर जो है ना वो 0 0 है. सो इसका मतलब है कि अब आपकी जो लाइन मैं एक दूसरे कलर से बना रहा हूँ. सो 180 डिग्री वुड बी समवे हियर. एग्री? राइट अरबाब? यस सर. Yes or no? जी So जी. this point will be here and the upper point will be there. Agree or not? यस सर. Yes or no? यस. And what about this point C? This point C would be here or not? यस सर. एक बार. Okay, so it is rotated 90 degrees, sorry, 180 degrees clockwise. Get it? Easy? यस सर. And sometimes we have the confusion that whether the shape is translated or whether the shape is rotated or the shape is reflected. Agree? Sometimes we do have the complications in the questions. And inshallah tomorrow I'll be practicing some past paper questions. So let's see. Let me write some tidbits. It would help you uh, to find the line of reflection. line of reflection To find the line of reflection, draw one perpendicular bisector, one perpendicular bisector like this. Like for example, look at the shape. This is a shape right in front of you, and I'm going to reflect it, and we'll find a line of reflection. So, for example, this is the shape, and this is also a shape, and it is. Is this reflection or not? Yes or no? यस सर. इट इज. Okay, so to find the line of reflection, you need to join the two corresponding points and see all the lines would be parallel. All the lines will be parallel. ये एक मिनट. अच्छा, ये थोड़ा सा मुझसे गलत बनी है शेप. लेट मी एडिट द शेप, अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे. तो इससे बेहतर हम इतनी मेहनत करें तो शेप जो है ना वो हम ठीक बनाते हैं. सो ये ले लेंगे हम सेंटर. ओके जी, this would be the point. This is center. So now join it. Okay ji, this is shape A and this is shape B. How to find out the line of reflection? Let's check. You have to join the corresponding points और आप देखेंगे कि all the corresponding lines will be parallel to each other. Let's see. Let's check. Is this parallel or not? Is this parallel to this one or not? यस सर. Let's try another one. Yes, everything is parallel. Agree? So let's find one perpendicular bisector, and we can see that the perpendicular bisector would be right in the middle. So we have to go 2.5 blocks like this. So this is my line of reflection. Get it? In boxes, it is very easy to count to see line of reflection. We barely need a perpendicular bisector using compass. So you can use the compass as well. You can use परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कॉम्पस भी लिख देता हूँ यहाँ पे. आप कॉम्पस से भी बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं वीडियो बना के भिजवाऊंगा. ओके, फॉर द रोटेशन लेट्स सी.
Let's see. पूरे चैप्टर में कौन कौन से शेप्स आ सकते हैं? बेटा ट्राइंगल होते हैं, हेक्सागन वगैरह ये सब चीजें होती हैं, लेकिन बहुत इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। ओके, जरा एक बात मुझे बताएं अरबाब, जी सर। मेरा बेटा, इज दिस रोटेशन और रिफ्लेक्शन? इट्स रोटेशन सर। इट्स अ रोटेशन। यस सर। Let's prove it. Okay, it's a rotation. Let's join the corresponding points. And if the lines are parallel, so it's not rotation, it's a reflection. Okay, let's check. So this line will go like this. Let's check this one. Are they parallel to each other or not? Yes sir, they are. They are parallel or not? They are sir. They look parallel, so it means that the shape is reflected. It's not a rotation. ठीक है, don't say blindly. Okay, तो सर वो ठीक है, आपने 90 blindly, डिग्री पे रोटेट नहीं हुआ इसका सर? बेटा आप 90 डिग्री पे रोटेट हुए हैं कि नहीं हुए, ये रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। क्या हुआ है? ये पूरा। ये रोटेशन नहीं है आपके लिए, गेट इट? सो अभी हम लोग करेंगे, देखें, अगर ये 90 डिग्री पे रोटेट होता तो अरबाब इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे होता, ये 3 ब्लॉक्स होते इधर, एग्री? तो सर ये 180 पे हुआ है ना अभी? ये देखें, अभी ये 2 ब्लॉक्स होते ऊपर, एंड दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट, एग्री? इट्स अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दिस शेप, यस और नो? यस सर, तो ये 180 पे हुआ है ना? अभी मैं आपको बताता हूँ ना, ये नीचे वाला, अभी इस शेप को मैं 90 डिग्री और रोटेट करता हूँ, एग्री? यस सर। तो ये जो वर्टिकल पिलर है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल पिलर जो है ये वाला, क्या ये वर्टिकल हो जाएगा कि नहीं? जी सर, ये हाँ नहीं है सर। तो इसका मतलब है ना कि रोटेशन इसको कहते हैं जो हम कर रहे हैं, एग्री? जी सर। The center one is a reflection, it's not a rotation. Okay, यस सर। okay, to find the line of reflection हमें वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, और वो भी राइट इन द वेरी मिडल रख के स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, और बॉक्सेस में लाइन लगाना इट्स एन इजी टास्क। ओके, तो सर रोटेशन कभी पैरेलल नहीं हो गया? रोटेशन कभी पैरेलल हो सकती है, जरा आप देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस शेप। अच्छा, मैं आपके लिए बाकी लाइनें जरा मिटाता हूँ, ताकि, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ आ गया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं बाकी लाइनें मिटा देता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। ओके, अभी हमने कहा है ना कि ऊपर वाली ये वाली शेप और ये वाली शेप रोटेट हुई है, यस और नो? यस सर। लेट्स जॉइन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। सो दिस पॉइंट इज दिस वन, राइट? यस और नो? जी सर। ओके, what about this one? This point is this one or not? यस सर। Are they parallel or are they intersecting? इंटरसेक्टिंग सर। It means that it's a rotation. Okay, agree? यस सर। और रोटेशन के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सेंटर पॉइंट मिल गया है ना जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जी सर। सो दैट्स 180। ये क्या हुआ है, गेट इट? बस सर ये खामखा है ना कि बस अगर पैरेलल मैच हो तो रिफ्लेक्शन है, और अगर नहीं हो तो फिर रोटेशन नहीं है ना। नहीं है तो फिर रोटेशन होगी, ठीक है? कल इंशाल्लाह ताला हम लोग बाकी के इसके ऊपर पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग जो है ना पूरे इन नोट्स को देखिएगा, ठीक है? मैं नोट्स भी साथ में शेयर करूंगा, आपने कोशिश करनी है कि इसको जरा सही तरीके से पढ़ लें, समझ लें। कल पास पेपर क्वेश्चंस के अंदर जो है हम लोग इंशाल्लाह इसको और अच्छे तरीके से, जी P4, ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।